It's not hearing a case, it's inquiry. So वो आपने जो inquiry commission की बात की, तो ये खुद ही inquiry commission है in a way. It's more powerful than inquiry. Contempt के पास भी इनके पास है. बिल्कुल सही है. मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं submitted. The answer is. Khan साहब, let me put my anxiety to you. Every Supreme Judicial Council is not the Supreme Court. It's a separate constitutional body. Agreed? Every constitutional body should have maximum autonomy to decide matters. Agreed? Thirdly, we don't want to encroach or say or do anything. It just so happens that I'm a member of the Supreme Judicial Council as well, but we create precedent as well, that it undermines the Supreme Judicial Council. Supreme Court is not a watchdog over. However, like every other constitutional body, when a constitutional provision or a fundamental right is being violated by anybody or not being considered, let's both ways, then the Supreme Court is the only court which has the power, or the High Court, not in this case, to direct that this be done. Yes. So we have to be very careful how we proceed in this matter, because it will, like you are citing Justice Clark's case after 50 years, this will become precedent and it will be cited before us maybe earlier than 50 years. So we have to be very careful as to not disturb the perfect balance that the constitution makers have provided in the constitution. There is an intervening judgment 2018 की, उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे डिस्कस हुए हैं, और उसमें ये आया उसकी हैसियत क्या है ये भी डिस्कस हुई है. मेरी गुजारिश है उस जजमेंट को जरा PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 538. I was counsel that again. Shaukat Siddique's case. This is Iftikhar Chaudhry's case. This is PLD 2018. वो अच्छा एक और जो आपका मैटर, नहीं ये नहीं का है, ये तो आप ही का केस है ना? जी वही. इसमें ये एस्पेक्ट, प्रोसीजर एस्पेक्ट्स बड़े डिटेल में डिस्कस हुए हैं. Which part you want to read from? जी. अब मैं आपको वो जो है ना बताया कि वो मेरे नोट्स निकाल दो, दूसरे वाले नोट्स में. पेज 5559 पे आ जाए. 538 से जनाब. पेज 5559 पे पैराग्राफ 51. My lord, my lords, am I needed for these proceedings, or can I be excused for now? Is there something urgent? Yes, I have. There's a matter which I have to argue, not before. Okay, fine. ठीक है. But you must take more. कोई बात हो उनको बता दीजिए. But you've noted the points, I have. ठीक. Sir, this judgment is very thorough judgment discussing various aspects of Article 209. पहला जो point out करूँगा वो page 555 है, para 46. जी. Historically, page 555, 46. Historically, the fundamental rights of the people require protection from the excess of the executive and the vested interest, both commercial and political. In order to safeguard the fundamental rights of the people guaranteed under the Constitution, the independence of judiciary obviously must be insulated from the onslaught of the executive and such vested interests who are past masters at institutional capture. Thus, the security of tenure of judges, more so those of the superior courts, is imperative, and therefore adequate safeguards in this behalf are provided, including by enacting what appears to be a rather cumbersome and strict process of their removal. This cardinal principle is reflected in the constitutional dispensation of all the democratic countries, people
by citizens and not subjects. The exception in this behalf are almost always found in... Fine, you don't need to say this, it's obvious जी. नहीं सर, एक ये बात जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो जनाब देखिए पेज 559, ये जरा पैरा 51, ये जरा जरूर देख लीजिए. पेज 559 पैरा 559 पेज पैरा 51. The relevant provisions of the Constitution, more particularly Articles 209, 210 and 211, when examined in the light of the judgment handed down by a larger bench of this court in the case reported as Chief Justice of Pakistan Haroon and the previous pronouncements on the subject noted and quoted with approval in the aforesaid judgment, the relevant portions whereof have been reproduced in extenso herein above, should reveal that, firstly, the SJC is a unique forum created by the Constitution. Secondly, the SJC is not a court, though it may exhibit some of its trappings, including the power to punish for contempt. So it is not a court. Yes, year 2010 की judgment भी. Thirdly, the proceedings before SJC are essentially a fact-finding inquiry, sir. This is what I am submitting here. This is the function of the SJC. Fourthly, the SJC is akin to a domestic forum and it conducts administrative proceedings regarding the question of conduct or capacity of a judge who is to be judged by his own peers. Fifthly, the findings of SJC are recommendatory in nature and do not enjoy the status. So, yes, agreed. What is the point you want to make? I'm trying to make here is a domestic forum. Your Worship was saying that it's just like as if it is some kind of a rival court to Supreme Court. No, it is a domestic No, court. it is not. It's a constitutional body. It's a constitutional body. So, what happened in this case? Why did you come to court? What relief did you get or not get? इसका primary function जो है वो इंक्वायरी है. नहीं, ये फैसला जो आप साइड कर रहे हैं, ये क्यों आया आपका केस सुप्रीम कोर्ट में? ओपन इंक्वायरी. केस क्यों आप लाए सुप्रीम कोर्ट ये वाला? ये इसलिए कि हमने कहा था कि इस केस में कि हमारी ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा नहीं, इट शुड बी इन फोरम. इस केस में फिर तो आप ये ग्रीवेंस दोबारा एजिटेट नहीं कर सकते हैं ना हमारे सामने. नहीं, बात क्या हुई, इसमें उन्होंने अलाउ कर दी ओपन इंक्वायरी. This judgment allowed open inquiry subject to certain conditions. वो पैराग्राफ किधर है? जी वो उधर भी आ रही है. It's a very historic judgment in that कि इसमें आप कहते नहीं अलाउ हुई हैं? सब SJC कि क्या फायदे? वो वापस भेजा ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 577 पैरा 96. वो एक Consequently, the question regarding the conduct of proceedings. तो ये तो वो रिमांड हो गया ना. ये केस रिमांड का केस है. नहीं, इसमें उन्होंने कहा कि नो हामिद खान साहब सब्जेक्ट टू हम जो इतनी देर से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये पैराग्राफ 96 जो माय लॉर्ड ने पॉइंट आउट किया, सब पढ़िए. नहीं वो ठीक है, उससे आप पढ़िए तो. सर बात ये है, आप पहले पढ़े तो ना 577 पे. Consequently, the question regarding conduct of proceedings through an open justice as requested by needs to be revisited and decided afresh by SCG, not standing uninfluenced by its order dated so and so. जो order set aside उन्होंने किया. आप पढ़े ना. In the light of the observations made herein above. In the light of the observations. So this is observations क्या हैं? एक सेकेंड जी. सर हमारी बात सुन लेना. अभी हम आपसे बार बार पूछ रहे थे रिमांड, तो ये रिमांड ही तो किया है. पिछले सवालों का जवाब है तो ये पहले सवाल का जवाब इधर मिल रहा है. मैंने भी तो रिमांड ही मांगा है. नहीं, अगर आपने बताया ही नहीं कि आप कोई और वजह से बताया. जजमेंट का मैं ये कह रहा था कि उसमें फिर क्या किया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस ऑर्डर के बाद? इस ऑर्डर के बाद उन्होंने अलाउ की थी. इन दैट पर्टिकुलर केस अलाउड ओपन हियरिंग. वो ऑर्डर कहाँ है? वो कोई दूसरा रेफरेंस था? वो दूसरा रेफरेंस 242 है. अच्छा, ये केस नहीं. जो इस केस में इम्प्यून था वो रेफरेंस 242. लेकिन इस रेफरेंस की तो बेसिस जो है वो तकरीर है और उस तकरीर को आप डिनाई नहीं कर रहे हैं, उसके कंटेंट्स को. ठीक है, but then that has to be inquired into.
तो मेरा गुजारिश ये करनी थी जो जनाब के ऑब्जर्वेशन थी, That reference was dismissed. What happened? that was never decided. You want that, ये proceedings take off. you want that भी also be decided. आप चाहते हैं कि उसको भी डिसाइड करें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इसकी बात नहीं, मैं तो आपके सामने आपका प्रेसिडेंट दिखा रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ये है, फिर उसमें इंक्वायरी का तरीकाकार इसमें बड़ा अच्छा तरह डिस्कस हुआ है, वो भी जरा देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो इंक्वायरी होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उनके ये पैरामीटर्स होंगे। मैं उसकी तरफ जनाब की तवज्जो दिला रहा था। वो तो आखिरी में उन्होंने कहा कि जी ठीक है, रिमांड कर रहे हैं आप, इस जजमेंट की लाइट में आप डिसाइड करें। परफेक्टली ऑल राइट। वो एक पैरा था, मैं कहा था इंक्वायरी में ये कुछ होना चाहिए। तो खत्म। जी सर, सो मेरी गुजारिश ये है कि all the judgment so far says that a judge cannot be removed on the basis of a report which is not based on inquiry, and this is the case. Without inquiry, the Supreme Judicial Council has submitted a report in which they have recommended the removal of the judge, and therefore that is clearly an unconstitutional void non-est order. साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।